ছাৰ মেডাম দেখোন আজি আবেলিকে পাবহিয়ে। এই কলগ্ৰহটোক কেনেকৈ ঘৰ পৰা উলিয়াম বাৰু? ডাইৰেক্ট কৈ দিওঁ আজি হয় হ'ব। প্ৰথম আহোঁতে মই আকৌ কেইদিনমানৰ কাৰণে আহিছে বুলিহে ভাবিছিলোঁ। কিবা কাম চাম বিচাৰি ফুৰি কৰি বোলে আকৌ যাবগৈ, ঘৰ চৰ ল'ব। এতিয়া দেখোন হিলাৰ নামেই নাই। এক পইচা খৰচ নকৰা চব ময়ে খৰচ কৰিব লাগে। মোৰ ছেভিংছৰে খেলি মেলি হৈ গৈছেগৈ সি অহাৰ পৰা। ভাই ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গ'ল নেকি? তোৰ লগত মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আছে। কি কথা? চা মোৰ চাকৰি যাব, তই যদি এনেকৈ ইয়াত বহি বহি থাক নহয়, আজি ইভিনিঙত মোৰ ছাৰ মেডাম পাই যাবহি। তই যদি ইয়াত সোমাই থাক মোৰ চাকৰিটো যাবই, তোকো পুলিচত দিব। সেইকাৰণে তই ভালে ভালে ওলাই যা। মই আৰু ইয়াতকৈ বেয়াকৈ ক'ব নোৱাৰিম তোক। তই এনেকে ঘপককে মোক উলিয়াই দিলে মই কলৈ যাম বাৰু কচোন? এই চেন্নাইখনত মোৰ কোনো চিনাকি নাই। তোৰ ভৰসাতেতো গুচি আহিছিলোঁ, এতিয়া মই ঘৰলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰো। তই মোক এনেকে নিথোৱা নকৰিবি ভাই, কিবা এটা তই মোক হেৰি কৰি দে আৰু ক'ৰবাত থাকিবলৈ যোগাৰ এটা কৰি দে। চা তই এনেকৈ ক'লেই নহ'ব নহয়। মই ইয়াত যেন তেনে কাম এটা পাইছোঁ, ইয়াত কাম পাবলৈ বহুত দিগদাৰ। হ'লেও আৰু তই মোৰ বন্ধু বুলি মই এজন চাচাৰ নম্বৰ দিম তোক। সেই চাচাৰ লগত কথা পাতি ল'বি, তোক কিবা এটা নহয় কিবা এটা সৰু সুৰা কাম আৰু থাকিবলৈ কিবা এটা দি দিব। তাতকৈ বেছি মই হেল্প কৰিব নোৱাৰোঁ। তই সোনকালে বস্তু বাহনি বান্ধ আৰু তই ওলাই যা মুঠতে। চাচা নম্বৰটো তোৰ বেগৰ ওপৰতে লিখি থৈ দিছোঁ মই। যাগে যা, তই যোৱাটো মই চাব নোৱাৰিম। এতিয়াহে পাতল পাতল লাগিছে পাই। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहूंगा मैं ओ मेरी सालू। चाचा हाय कौन है बेटू? चाचा मैं गोवर्धन। किसका धन? मेरा नाम गोवर्धन। तो मैं क्या करूं? नहीं माने चाचा, मेरे फ्रेंड ने आपका नंबर मुझे दिया था हेल्प करने के लिए। ठीक है बैठ। क्या बोले चाचा जी? तो बैठ जा, ले पिज्जा खा। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। अरे फ्री है, खा ले। बॉटम है तो वही साफ कर दूंगा, पैसा नहीं है। लेकिन तुझे पैसा मांगा है मैंने? अरे ये बता तू कहाँ से है? मैं असम से हूँ। ओ अच्छा, असम से है। एक तो मेरा मियाँ भाई असम में रहता था एक जमाने में, एक दो बारी में गया था। ओ तेरे को काम चाहिए ना, तो क्या करे अभी? वैसे तो मेरे ढाबा है, वहाँ पे काम कर सकता है तू? कर सकता हूँ। पैसा कितना मिलेगा? लेकिन मेरा रहने का भी ठिकाना कुछ नहीं है। देख लेंगे, चिंता मत कर। अरे तू पिज्जा खा। इतने मुँह बड़े बड़े पिज्जा खाने के लिए कैसे बात? क्या हुआ, पसंद नहीं तेरे को पिज्जा? नहीं, इतना पसंद नहीं है। क्यों? सब लोगों को अच्छा लगता है पिज्जा, तेरे को अच्छा नहीं लगता? वो मेरा गैस हो जाता है पिज्जा खाने से। वो तो बीमार भी होता है क्या? क्या क्या बीमारी है तेरे को बोल तो? बीमारी मतलब कुछ किडनी का बीमारी, हार्ट का बीमारी, तेरा आँखों का रोशनी तो ठीक है ना? क्यों पूछ रहे हैं इतना सब कुछ? वो नहीं, यूं ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, ताकि कभी तेरा कुछ हो गया तो पुलिस वगैरह के केस में जाके फंसना ना पड़े अगर तू मर गया तो कभी। क्योंकि बीमार होने से तो तू ज्यादा दिन रहेगा नहीं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। क्यों डर गया क्या तू? अरे क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं। मुझे काम वाम नहीं चाहिए, मैं आज ही घर लग जाऊंगा ट्रेन से। अभी ये बता तो रेलवे स्टेशन कहाँ है? जीपीएस देख ले, एआई का जमाना है भाई, मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया तूने? माफ करना भाई, अब मैं निकलता हूँ। बेलेगৰ জেগাত মুদম নেখাতেতো এতিয়া চেন্নাইত আছো ভাই। অসমত থকা হলে গুৰুলা গুৰুল দিলোহেঁতেন। মানুহটো ভাল নহয় যি দেখিলো। ইয়াৰ ধান্দা বেলেগ। ছোৱালী মানুহ হলে এতিয়া দিগদাৰ আছিলে, মই জল্দি পলোৱাহে কথা। भाग गया निकम्मा। बकरा अच्छा था, दोनों किडनी मिला के 1 करोड़ तो मिल ही जाता। उसने तो पिज्जा खाया ही नहीं, खाता तो फंसता, नींद आता मैं उसे उठा लेता। अब क्या करे, दूसरा बकरा का इंतजार। भाई चल ना कहीं रेस्टोरेंट पे खाते हैं, चल पिज्जा वाले के पास चलते हैं, चल। वो पिज्जा वाले के पास तो नहीं जा पाएंगे आज, उधार ही 5000 क्रॉस कर गया है। चल पिज्जा का दुकान ही तोड़ डालते हैं आज। गुड आइडिया, चल। नहीं तो किसी को लूट लेते हैं, पैसा मिलेगा तो कहीं जाकर खा लेंगे। पहले बकरा ढूंढ। ले आ गया बकरा। जी भैया जी। किसका भैया? कौन सा भैया? बॉस बोल बॉस। बैग में क्या है? जो भी है निकाल, माल निकाल। निकाल। कुछ नहीं है बॉस, सिर्फ मेरा कपड़ा है, वो भी पुराना, चड्डी भी फटा हुआ है। बैग रख यहाँ, पॉकेट में जितना भी कैश है, सोने का चेन है, अंगूठी है, सब निकाल और कट ले यहाँ से। सच में मेरे बैग में सिर्फ कपड़ा ही है, कुछ भी गहना नहीं है मेरे पास, अंगूठी भी नहीं है, चेन भी नहीं है। कैश सिर्फ 10 रुपया है, वो भी कॉइन वाला। दिमाग का दही मत कर तू। बैग रख और इसकी तलाशी लो। ए भाई तलाशी लो इसकी। तू ही ले ले तलाशी। इधर आ।
सच में कुछ नहीं है इसके पास, खाली जेब कंगाल कहीं का। दे इसको 2-3 लाख और भगा। হাতীটোৱে যে সমান অসমীয়াত আমাৰ যিখাৰি বাক্য আজিহে মই ভালকে তাৎপৰ্য বুজি পাইছো। ইমান অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছো নহয় মই আজি সঁচাকে। মা দেউতালে খুব মনত পৰিছে। কেলেনো নিজৰ জন্মভূমি এৰি পলাই আহিছিলো মই। এতিয়া বিদেশ বুলিয়ে কৈছো, অসমৰ বাহিৰত যেতিয়া মোৰ এনেকুৱা গতি হৈছে। এটাইতো মোক কিডনীলে খাওঁ অৱস্থা, এইকেইটাই মোক কিডনী পিটিলেও মোৰ ওচৰত একো নাছিলে, থকা হ'লে মই দি দিলোহেঁতেন। 10 টকাটো লৈ থলে, কাপোৰ কানিকেইটাও লৈ থলে। মই এতিয়া কি কৰোঁ আৰু? যিখন ট্ৰেইনে আহিব অসমৰ অভিমুখে মই সিখনতে উঠি দিম আৰু। মোবাইলটোও লৈ থলে, মই কাকো ফোন কৰিবও নোৱাৰোঁ। এতিয়া হে ঈশ্বৰ, পুলিচ থানালৈ যাওঁ নেকি? আকৌ জেল হ'ব পুলিচ থানালৈ যোৱা মানে। মই যেন তেনে আৰু ৰাতিপুৱালৈকে হেৰি কৰি পেলাই ট্ৰেইনখনতে উঠি যাবগৈ লাগিব। জগ চুনা চুনা লাগে, জগ চুনা চুনা লাগে, कोई रही ना जब अपना। ভৰিটো বেলেগ বিষাইছে, ভাঙিলে নেকি ঠিক নাই। এইকেইটা মোৰ ভৰিটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱাই নাই। হয়তো ব্ৰেকফাষ্টটো খাবলৈ নিদিলে, মোক উলিয়াই দিলে ঘৰৰ পৰা। বন্ধুত্ব ভাল উদাহৰণ দিছেহি। আকৌ চাহটোৱে আকৌ মোক কি কয় পিজ্জা খাবলৈ দি সন্ধিয়া টাইম মাৰিবই খুজিছিলে। এইকেইটা থকা 10 টকাটো কাঢ়ি ল'লে। ঐ মোৰ এইটো ষ্টৰী কোনে শুনিব, কাক বুজাম মই? खामोशियाँ एहसास है, तुम धुन तो सुनाओ जरा, बेकरार है बात कहने को, मेरे साथ क्या क्या हुआ। মই ক'ৰবাত লুকাই পেলাই শুই থকাহে ভাল দেই। আকৌ কোনোবাই মোক উঠাই লৈ যাওক, ঠেং ভৰি কাটি মাগিবলৈ মগনীয়ে বনাই দিয়ক, ক'ব নোৱাৰি দেই। সেই ভগৱান ৰক্ষা কৰিবা আৰু তুমিহে আছা এতিয়া মোৰ লগত আৰু দেখি চাচা আৰু কৃপা কৰিবা মোক। আকৌ যদি আধা বাটতে ট্ৰেইনৰ পৰা মোক নমাই দিয়ে টিকেট নহ'লে, পইচা দিব যদি নোৱাৰো, তাতকৈ ভাল 2 দিনমান ষ্টেচনতে মাগি কৰি পইচা কেইটামান গোটাই লওঁ, তাৰপিছতহে ঘৰলৈ যাম আৰু। এইফালে ঘৰলৈ যামহে যাম, ক'লৈ যাম? বাবলিয়ে চাগে একদম মুঠি ধৰি আছে। দেউতাৰ ওচৰলৈকে যাবগৈ লাগিব। দেউতা বা ক'ত আছে এতিয়া? যেন তেনে বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু। দেউতাৰ তাতে কাম বন কৰি থাকিমগৈ আৰু মাহীমাৰ লগতে মিলি জুলি। মই এতিয়া প্ৰথম পেটৰ টাৰ্ণাটো মাৰিব লাগিব। ক'ৰবাত কিবা পৰি ধৰি আছে নেকি, অকণ খাই লওঁ, নহ'লে একেবাৰে এনাৰ্জি নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ মোৰ দেই। ইমান পিটিলোঁ, ইমান পিটিলে জানো বাৰু মানুহ হ'বই।